Hello everyone. This question appears in class 7th NCERT chapter of Comparing Quantities. This is 8th question of its exercise 8.2. So the question says that out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? So हमें given है total number of voters is equal to 15,000 and find out करना हमें percentage of people who voted. So हमें गिवन है 60% voted और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द परसेंटेज वोटर्स हु डिड नॉट वोट. सो हु यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हु डिड नॉट वोटेड इज इक्वल टू 60% ने वोट दिया है, सो हो जाएगा 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%. एंड हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. सो नंबर ऑफ पीपल who did not vote it is equal to 40% of 15,000. So percent का साइन हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 into 15,000. So 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी. तो आ जाएगा हमारे पास 6,000. So 6,000 voters did not vote. Thank you.